Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call versus Startup Technical Data. If you see yesterday's trading session, NIFTY managed to stay above 19,800 or levels and probably traded in the entire range. And if you see in the closing session, we took a some dip below 19,800 odd levels, but we managed to stay above 19,800 odd levels. So if you see NIFTY is hinting a breakout towards 20,000, 20,200, and if you get a weekly close over 19,800, so it would be the lows of 19,500 is held well and that is protected well, so we could head move higher towards 20,200, 20,400 in the coming session. Now coming to the overall sector specific trend, if we see yesterday, uh, yesterday CPSE and small cap energy and financial services stocks were witnessing buying, minus realty and auto sectors were witnessing some profit booking overall in the trading session. And now coming to the Bank Nifty have witnessed a strong gap up opening and it managed to stay above 44,000 levels, and we have but it is facing a hurdle. We have 44,500 and 44,600 levels. Once this is taken out, it would be moving towards 45,000 odd levels, and post that we could be witnessing a mega breakout towards 46,500 odd zones. So if you see yesterday, the advanced sector ratio was positive. Stocks like the Kotak Bank, PNB, and HDFC and IDFC Bank were looking strong on charts, while the laggards were the other side, that is Axis and ICICI Bank on the bank Nifty side. So coming to the Nifty derivatives, if we see there was a long bottom in the index of 2% pace, and the PCR also dropped from 1.0 to 1.04 odd levels. Similarly, Bank Nifty futures also witnessed a short covering of 6 odd percentage, and PCR also jumped from 0.75 to 0.83. If you see Nifty PCR is managed to hold above 1 odd levels, so that is a indication that the call writers are not so much aggressive on the option front for the Nifty. Now coming to the other FIs, FIs are also covering their short position slowly. Yesterday they were 27% long, now they are 29% long on the index. And now they are net short by 70,000 to 76 contracts. In the cash market also they were buyer by 263 odd crore by DIs by 110 odd crore. So long build-ups over the October expiry, we are witnessing a good longs in Apollo Tire, Canada Finance and Exide Industries, while shorts were witnessing Havells, LTT. Stocks which are looking good for the today's trading session and upcoming trading sessions are EPL Apollo. EPL Apollo has witnessed a good breakout. It could witness 1800, 1850 odds in the coming sessions, similarly led by LT Finance Holdings and KPR Mills and CI Automotive. Now coming to the morning trading session, if we see Gift Nifty is hinting a flattish opening of negative of 16 or 20 odd points. And if we see overall US market also was yesterday trading in a flattish zone only, so we could be expecting a flattish opening. And it dipped towards the 19,750 level. Should we use an opportunity to add longs over here? Short should be avoided unless until we don't break 19,500. So that is the buy on this strategy, and we should use this to add longs and increase towards long side only. So that's it from mine, and hand over to Bhavesh for more. Hi, good morning all. So starting with the results of PCBL. So earlier known as Philips Carbon Black reported results which were in line with our expectations. Importantly, specialties black volumes grew by 32% QOQ to 15,000 tons. So one that is major positive, and the company EBITDA per ton was around 18,000, and the company targets that it to be over 20,000 in next 2-3 years. And they said that they could achieve it earlier also. The positive, and valuation wise, stock is reasonably priced. So we believe there is more upside despite the run up. Second, Zensar and Newgen, two IT companies reported results. While Newgen's revenue growth was nearly 30% YOY, Zensar's QOQ growth was nearly 3%. So, but both the companies reported better than expected profitability. So that is positive. Then on Majgaon Dock, so Majgaon Dock has bagged an order of 310 crores from government for construction of coastal guard training ship, which is positive. Second one, Astral Microwave. So the company has executed license cum transfer technology agreement between New Space Bangalore and Indian National Space Promotion to utilize the know-how related to Minisar, which is one of the projects. So this will enhance its radar capabilities. So quite positive. So that's it from me. Over to the retail team.
Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. So we'll start with some further updates. First is on Biocon, where Biocon Biologics has received a communication from the US FDA pursuant to its July 2023 CGMP inspection at its insulin's manufacturing facility at Johar, which is in Malaysia. The FDA has determined the inspection classification as OAI, which is the official action indicated. The OAI status may cause delay or withholding of pending product approvals or supplements from the facility. So, a slightly negative update for Biocon. Next update is on Hudco, where the government plans to offload 7% in Hudco through the offer for sale route on Wednesday. It has put on the block of a total of 140 million shares at a floor price of rupees 79 per share. Speaking of Indigo, the airline has established over 20 international flights across Central and Southeast Asia, Africa, and the Middle East in the past 6 months. Indigo has now a network connecting 32 international destinations. Next update is on Glenmark Pharma, where the company has received final approval from the US FDA for Apamilast tablets available in 10 mg, 20 mg, and 30 mg strengths. These tablets serve as the generic version of Amgen International's renowned Otezla. According to IQVIA annual sales data, Otezla tablets generated annual sales of approximately $3.7 billion as of August 2023. The final update is on LIC, where the Income Tax Department has approached the Bombay High Court to challenge a tribunal order that ruled in favor of the LIC in tax dispute cases involving a cumulative amount of rupees 4,993 crores. The issue is related to two tax dispute cases pertaining to amounts of rupees 1,838.8 crores and rupees 3,153.9 crores respectively. Both the cases are related to the assessment year 2013 and 2014. So this was all from my end. I'll now hand it over to Prabhakar sir for further updates. Good morning, team. Yesterday, Canfin Home reported result. On the face of it, there are a lot of changes happening as the new management has taken over. Their net interest income was 316 crores, profit after tax 158 crores because of the adjustment which they made, the fraud which was reported from Haryana. They have adjusted, otherwise, their profit would have been even higher. ROE was 15.96%, and the company has almost entered 36 years. Their NIMs have started to improve. So cost to income ratio is something which is very interesting, which is at 16.25. That is where Canfin Home will have an advantage. Their DSAs have reduced, from 1,400, it has now come to 1,300. Salaried segment is almost 72% of their total loan disbursement. 33,359 crores is the loan book, which is 16% growth compared to previous year. So I think Canfin Home yesterday post result, the stock has started to rally. We like Canfin Home at current level. It can be one more quarter where Ambala, Haryana Ambala fraud write-off will take place, but this time it will be slightly less than this quarter. So otherwise, I think they are going in the right direction. So this stock will see a huge re-rating very soon. So it is something for a long-term investor to buy. Newgen result, our analyst is very positive. He has upgraded to buy, and we were the first to cover Newgen. So I think Newgen is one stock where they are reporting a very good results. It is a buy. Dixon is one more stock to watch out for. Dixon, Sirma, SGS, Kane Software, all these, they are benefit higher sales of laptops, Indian-made laptops, mobile phone. So I think these are stocks to watch out for. Broking companies are reporting very good results. Latest in the line is IIFL Securities.
Their total income was higher by 65% at 553 crores. AUM was 1,69,822 crores. Profit after tax was higher by 94% at 107 crores. After Angel One and ISEC, this also has given a good result. We like Angel One. Yesterday also management was on CNBC. No, they said they have created a super app. No, so people are moving very fast. Even we like HDFC, AMC and NAM India. So we like GAIL and MGL for valuation purpose. So I think these stocks can do good over a period of time. Omax, which is a real estate company, has got a OC, occupancy certificate from Municipal Corporation of Delhi for their multi-level parking and commercial project in Chandni Chowk, Delhi. It has been in PPP model, built, operate and transfer model, where 2,300 vehicles can be parked. It is a total built-up area of 1.11 million square feet. And the shops will be there, also many shops will be there. So, this is something very positive for them. Titan will rise NCD worth 2,500 crores. So we can expect aggressive expansion from Titan also. Bajaj Finance reported their results. On the face of it, very good results. Their AUM growth was 33% at 2,90,000 crores. And their profit after tax was higher by 28% at 3,551 crores. Net NPA was 0.31%, which is a manageable level. Compared to last quarter, it is slightly lower, which is very positive. So the net interest income also was higher by 26% at 8,845 crores. Good results, but it is already there in the prices. So we like Canfin Home better than Bajaj Finance. But Bajaj Finance being the favorite in the street, there can be some rally. ROA was maintained at 5.16%. Graphite has informed the exchange about a security incident in company's German operation in their, in the digital IT services. I don't know how impact it will be, but any good correction in graphite would be an opportunity to buy. HPCL will be renting out retail outlets to Petromin Express. Petromin Express is a Saudi Arabia-based MNC. They are in the business of automotive services, vehicle distribution, fuel retailing, lube manufacturing and distribution. So almost 1,000 Petromin stores will come in Hindustan Petroleum stations. It is a 5-year project, which is long-term positive for Hindustan Petroleum. ICICI Pru Life also came with the results. There is a disappointment of results compared to the expectation. So I will not go great in the detail. Syngene International came with the results. So their revenue grow at 18.5% at 910 crores. Profit after tax was higher by 20% at 122 crores. These are before exceptional item. So I think results are in line or better than market expected. CCI has approved merger of IDFC into IDFC First Bank. Positive for IDFC First Bank. Supreme Industries are taken over a manufacturing unit of Parvati Agroplast. This will be 29th unit for Supreme Industry. The unit is spread about 13.48 acres of land and has 36,000 metric ton per annum capacity, out of which PVC pipe will be 15,000 metric ton. HDPE pipe will be 18,000 metric ton per annum. PVC-O pipes will be 3,000. So with this, they will enter into PVC-O pipes, and there they will invest another 200 crores, which can generate a revenue of 500 crores. So asset turn will be 2.5x for this unit. And with this, the total capacity of Supreme Industry will be
7,80,000 metric ton per annum in FY24. Maruti has said that Suzuki Motor unit of Gujarat, they will get a share swap which will be worth about 12,841 crores. So this is something very positive because they are not paying cash out. So TVS Motor Company launches TVS Jupiter 125 with Smart Connect TM technology, which is more hybrid model. Metro brand opens 800 store fit flop store in Hyderabad, Banjara Hill. So with this, flit flop stores are increasing. It is a 16 square feet. Metro has its own brand and it has third-party brands like Crocs, Flit, Flop, Fila, Skechers, Clog, Puma, and Adidas. So, Metro for a long-term investor can be a very good buy. Domino's Pizza introduces mutton and prawns pizza in India for the first time. So, it will be only in the eastern part of India. So, this is slightly positive for Jubilant Food. With that, over to you, team. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग ये कॉल को एक बार इंटरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट अपडेट है पीसीबीएल के ऊपर। नंबर जो आए थे वो न्यूट्रल आए थे। क्वार्टर टू फाइनेंशियल 24 का जो सेल्स वॉल्यूम है वो इनलाइन था एस्टिमेट से। वॉल्यूम ग्रो हुआ है 40% ईयर ऑन ईयर। और हम लोग इम्पोर्टेंटली देखें तो स्पेशलिटी ब्लैक वॉल्यूम से वो इंक्रीज हुआ 32% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15,574 है, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन की वो इंक्रीज हुई थी और डिमांड जो है ग्लोबल मार्केट में वो भी इंक्रीज हुआ था। देन कंपनी ने मेंटेन रखा है टारगेट EBITDA पर टन का अराउंड 20,000 पर टन कमिंग लाइक नेक्स्ट 2-3 इयर्स में। नेक्स्ट अपडेट है सेंसरटेक के ऊपर। कंपनी ने रिपोर्ट किया 40 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपांशन ऑपरेटिंग मार्जिन और मेनली ये लेड हुआ है एसएनजी एंड रैशनलाइजेशन पार्शली ऑफसेट होने के कारण 270 बेसिस पॉइंट वेज हाइक था। The sequential growth देख in terms of verticals जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो 6.7% है, BFS में 3% है, हाईटेक में 1.5% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। देन ओवरऑल हम लोग ज्योग्राफिक बेसिस पे देखें तो यूरोप अप है 11.3% से, अफ्रीका अप है 7.9% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 4.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डीप देखा गया यूएसए में। देन न्यूजन के नंबर से आते रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कंपनी ने ग्रोथ किया है 29.7% ईयर ऑन ईयर। उनका जो ब्रॉडर बेस ग्रोथ है अक्रॉस ऑल ज्योग्राफी में वो अच्छा था। देन ये बिलीव करता है कि ग्रोथ है वो मोस्टली लेड हुआ है लाइसेंस रेवेन्यू के कारण। ग्रोथ लेड बाय इंडिया जो है वो 38% है ईयर ऑन ईयर, EMEA में 34% है, यूएसए में 30% है और पीबीटी जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो स्टूड है अभी 20% से। देन नेक्स्ट अपडेट है आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने अप्रूव किया मर्जर के लिए आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए पॉजिटिव रहेगा। देन माझगांव के ऊपर अपडेट है। माझगांव शिपयार्ड लिमिटेड है, उनको एक ऑर्डर मिला है 310 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कोस्ट गार्ड और ट्रेनिंग शिप का। बेसिकली ये मिनिस्ट्री डिफेंस साइन कॉन्ट्रैक्ट किया है कंस्ट्रक्शन जो ट्रेनिंग शिप का है वो इंडियन कोस्ट गार्ड माझगांव के साथ अंडर द बाय कैटेगरी दैट इज इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी। करंटली जो ऑर्डर बुक है कंपनी का वो 39,117 करोड़ का है। ऑर्डर लाइन जो है पाइपलाइन लुकिंग है हेल्दी है। कंपनी का सबमिटेड बिड्स दिया गया है 6 सबमरीन्स के लिए अलॉन्ग विद द जर्मन बेस टीकेएमएस के लिए। कंपनी also एक्सपेक्ट कर रही है कि 3 और एड सबमरीन्स ऑर्डर होंगी स्कॉर्पिन बेस प्लेटफॉर्म पे। देन नेक्स्ट अपडेट है एस्ट्रा माइक्रो के ऊपर। कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है लाइसेंस कम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट बिटवीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु इंडियंस नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस दैट इज DOS अहमदाबाद में, जो यूटिलाइज करेंगे हाउ टू रिलेटिंग जो मिनी सार एक्सपैंड एयरबोर्न SR है उसके लिए और फर्दर एनहांस करेंगे उनका जो रडार कैपेसिटी है कंपनी का उसका।
बाइकॉन के ऊपर अपडेट एक कंपनी के जो स्टेप डाउन सब्सिडियरी बाइकॉन बायोलॉजिक्स उनको रिसीव हुआ है कम्युनिकेशन फ्रॉम यूएस एफडीए से जुलाई 2023 को सीजीएमपी इंस्पेक्शन हुआ था इंसुलिन मैन्युफैक्चर फैसिलिटी जोहर मलेशिया में। और उसका जो एफडीए उन्होंने डिटरमाइन किया इंस्पेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड द ओआईएस स्टेटस है कॉज वो डिले हुआ है और विथहोल्डिंग पेंडिंग है प्रोडक्ट्स अप्रूवल का और सप्लीमेंट्स का फ्रॉम ये फैसिलिटी के यहाँ से। देन ग्लेरमा फार्मास्यूटिकल है उनको भी रिसीव हुआ है फाइनल अप्रूवल यूएस एफडीए से एप्रेमालिसाइड टैबलेट्स का जो अवेलेबल है 10 20 30 mg एंड ये टैबलेट जो है वो सर्व करती है जेनरिक वर्जन ऑफ एमेजन इंक जो रिन्यू ऑटलेजा है अकॉर्डिंग टू IQVAI एनुअल सेल्स डेटा। ये ऑटजिला टैबलेट है वो जनरेट करती है एनुअल सेल्स अप्रोक्सीमेटली $3.7 बिलियन एज ऑफ अगस्त 2023। देन नेक्स्ट अपडेट है कि कल कैंटीनों के नंबर्स आए थे नंबर्स जो देखे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 158 करोड़ कंपनी ने रिटर्न किया है। कॉस्ट टू इनकम है वो अच्छा खासा कंपनी ने रिपोर्ट किया तो ये पॉजिटिव एडवांटेज है अराउंड 60.5 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 50.9% से हायर है और उनका जो पार्ट है बेसिकली एडजस्टेड किया गया एडजस्टेड पार्ट है तो उसके कारण स्टॉक में यहाँ से हम लोग रैली देख सकते हैं करंट लेवल पे हम लोग को स्टॉक अच्छा लग रहा है और ये जल्दी इसमें रिलेटिंग हो सकता है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे थे ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से देख सकते हैं। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी सिग्मा है कैन सॉफ्टवेयर भी है कंपनी जो आप स्टॉक को देख सकते हो। देन ब्रोकिंग फर्म के नंबर्स काफी अच्छे आए थे एंजल एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बाद एफएल सिक्योरिटीज के नंबर्स आए थे टोटल इनकम 553 करोड़ का रिपोर्ट किया है। AUM जो है वो 1,69,000 के अराउंड कुछ है पैड 94% से हायर आया है 107 करोड़। और एंजल वन का भी कल मैनेजमेंट का टीवी पे अपडेट आया था कि वो सुपर ऐप कुछ लॉन्च करने वाले हैं तो ओवरऑल हम लोग HDFC AMC नाम इंडिया के ऊपर पॉजिटिव है ये स्पेस में। इसके अलावा गेल MGL भी वैल्यूएशन वाइज अच्छा लग रहा है। देन ओमैक्स जो कंपनी है उनको ओसी मिला है दिल्ली गवर्नमेंट से जो पार्किंग के लिए सो बेसिकली 2300 व्हीकल्स कैन भी पार्क हो सकते हैं और शॉप भी रहेंगे तो ओवरऑल ओमैक्स के लिए पॉजिटिव है। टाइटन जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया है एनसीडी 2500 करोड़ के और अग्रेसिव इसके ऊपर एक्सपांशन करेंगे। देन बजाज फाइनेंस के कल नंबर्स आए थे AUM 33% से हायर आया है पांच जो है 28% से हायर आया है 3,551 करोड़ रिपोर्ट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 8,000 कुछ अराउंड 845 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया। NPE 0.31% है कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हैं आए हैं बट ऑलरेडी प्राइस में दिख ही रहा है बट फेवरेट है स्टॉक वीएसएस में तो इसमें हम लोग यहाँ से भी रैली देख सकते हैं। देन HPCL है वो रेंट आउट करेंगे रिटेल आउटलेट पेट्रोलमेंट बिजनेस जो एक सऊदी अरेबिया का है। ओवरऑल 1000 पेट्रोलमेंट स्टोर्स 5 years का ये प्रोजेक्ट होगा लॉन्ग टर्म के लिए HPCL के लिए पॉजिटिव होगा। देन ICICI प्रूडेंशियल के नंबर्स आए थे पर नंबर्स इतने कुछ खास नहीं आए थे। सिंजन के नंबर्स आए थे कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया 910 करोड़ का पैट जो है 122 करोड़ का रिपोर्ट किया 20% से हायर है। नंबर जो थे इतना नहीं आए थे। ने सुप्रीम इंडस्ट्री के ऊपर अपडेट है 29 यूनिट कंपनी ओपन कर रही है जो अराउंड 30.48 एकड़ के लैंड में होगा 36,000 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी है और वो अभी HDP की कैपेसिटी होगी 18,000 मेट्रिक टन पर एनम। ओवरऑल कंपनी एंटर कर रही है PVC पाइप्स में जो बेसिकली उसमें 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। टोटल कैपेसिटी अभी कंपनी की है कुछ 7,18,000 मेट्रिक टन पर एनम फाइनेंशियल ईयर 24 की। देन मारुति जो सुजुकी है उनका जो गुजरात यूनिट है वो शेयर स्वैप कर रही है तो ये पॉजिटिव होगा। TVS मॉडल लॉन्च करिए TVS जुपिटर 125 जो ये मोरली एक हाइब्रिड मॉडल होगा। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.